Hello students, the topic is if else in Java. If else मतलब क्या है? If else means if a condition is true, then the first part is executed, otherwise the else part is executed. अभी देखो if else का बहुत सारा varieties है. खाली if होगा, नहीं तो if else होगा, nested if होगा और if else if होगा. करेक्ट. तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे कि तुमको ये चारों टाइप का प्रोग्रामिंग के बारे में पता चले. करेक्ट. नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ द सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ में देखो, इफ अ कंडीशन इज ट्रू देन दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटेड. कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. फॉल्स है तो कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा क्योंकि मैंने एल्स पार्ट नहीं लिखा. ठीक है. तो देखो मैं एक कोड दिखा रहा हूं यहाँ पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्कोर? स्कोर का वैल्यू है 45. तो दिस इज 45. करेक्ट. नाउ 45 लेस देन 60. इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू. ट्रू है तो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो यहाँ पे क्या लिखा है? जो भी लिखा है देखो आउटपुट में सेम चीज आया. करेक्ट. Now what I am doing, I am just executing the code. देखो this is the code. I am executing this code. Now I am going to run this code. Correct? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो value is 45. 45 is less than 60, so this part will execute. Now I'm going to change this value. Suppose make this 75. So 75 is not less than 60. तो ये क्या होगा? ये होगा false. False है इसीलिए देखो स्क्रीन में कोई आउटपुट नहीं, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा. करेक्ट. ट्रू है तो दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट, लेकिन फॉल्स है तो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा. मतलब एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीन में कुछ नहीं आएगा. देखो कुछ नहीं आया. करेक्ट. सो चेंज दिस टू 15. अगेन कंपाइल दिस. ओके. ठीक है. तो चल रहा है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ only if. Okay. Now come to if के अंदर if. देखो ये पहला वाला if है, उसके अंदर और एक if है, तो इसको बोलते हैं nested if. if के अंदर if. Now look at this code. In this code the number is 75. Correct. The number is 75. Now 75 is more than 50. ये सही है ना? तो this will be executed. Okay. Now again this part will come into consideration. इसमें क्या है? 75. देखो 75 is less than 100. तो ये भी सही है, तो ये भी स्क्रीन में आएगा. करेक्ट. सो दिस इज एग्जीक्यूटिंग एंड दिस पार्ट इज एग्जीक्यूटिंग. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ. मतलब इफ के अंदर और एक इफ. इफ यू लुक एट द प्रीवियस कोड, देखो इफ खाली इफ है ना? लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो इफ है, उसके अंदर और एक इफ. करेक्ट. सो दिस इज द कंसेप्ट. नाउ चलो आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. दिस इज द कोड. I'm compiling this code. Okay. Now I'm executing this code. Perfect. तो ये if part भी execute हुआ है और दूसरा जो if है, if के अंदर वो भी execute हुआ है. Correct. I'm going to change this value. Okay. चलो now make it 45. ठीक है. I make it 45. Now my question is, जब चलेगा 45 greater than 50? No. It is not greater than 50. तो
ये जो अंदर वाला इफ है वो भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट विल जंप फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट। तो इफ जो इफ ब्लॉक है उसके बाहर आ जाएगा। करते हैं इसको एग्जीक्यूट, कुछ नहीं हुआ है ना। ओके, नाउ मेक इट 75 and change the symbol. Now look at this. Okay, number is 75. Now my question is 75 greater than 50. हाँ, 75 is greater than 50. तो स्क्रीन में ये आ जाएगा। जब नीचे आएगा यहाँ पे तो नंबर क्या है 75. Now 75 is not more than 100. तो ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट विल नॉट एग्जीक्यूट, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, करेक्ट। तो खाली पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट करके ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जस्ट टू एग्जीक्यूट दिस। ओके, I need to compile it again, save it. Next is compile file. Now run. Very good. देखो पहला वाला एग्जीक्यूट हुआ है और ये जो पार्ट है ना, दिस इज नेवर एग्जीक्यूटेड, करेक्ट। तो सही है तो इफ के साथ जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर सही नहीं है तो एल्स के साथ जो स्टेटमेंट है दैट गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एंड एल्स। तो लुक एट दिस केस। इन दिस केस टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर इज 32. नाउ इज इट करेक्ट? नो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो व्हाट विल बी प्रिंटेड? द वेदर इज वार्म, करेक्ट। Okay, now imagine the value is suppose this is not 32. This is not 32. Suppose the value is 25. Correct. तो 25 is less than 30. ये सही है। तो this part will be executed. Understand? When it is 25, this part is executed. When it is 32, then this part is executed. तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज अगर फॉल्स है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू है तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। तो ट्रू है तो इफ पार्ट, फॉल्स है तो एल्स पार्ट। In this case, what is the temperature? Temperature is 12. Now 12 is less than 30, so it will say it is a cold day, correct. The question is, this one is true, hence this part is executing. Previous case, this one is false, this one is false, hence the else part get executed, correct. Next is versatile if else if ladder. मतलब बहुत सारा कंडीशंस है, करेक्ट। लाइक इन द प्रीवियस केस देयर आर टू कंडीशन, दैट इज वन इज कोल्ड डे, अनदर वन इज वार्म डे। लेकिन इसको छोड़कर भी बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है ना। सॉरी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इफ एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ लास्ट वाला कंडीशन है उसको बोलते हैं एल्स। Okay, now look at this. In this case, what is the age? Age is 25. Correct. तो ये पार्ट सही है क्या? No, this part is not true. Now come to this part. ये पार्ट भी सही है, मतलब एज 13 से ज्यादा है, लेकिन 20 से कम है क्या? नहीं है, तो ये पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। Now it will come into this part. एज कितना है? एज इज 25. तो 25 से ज्यादा एंड 60 से कम, तो दिस पार्ट इज परफेक्ट। तो व्हाट विल बी द आउटपुट? द आउटपुट विल बी एडल्ट, करेक्ट। तो
when there are multiple options, अगर दो options है तो if else, तो it is दो option है तो if else, ठीक है। अगर एक ऑप्शन है तो if, when there are multiple options, so it will be if, else if, last one is else. So what is happening here in this case, there are multiple options. एज लेस देन 13 एक ऑप्शन, 13 से 20 के बीच और एक ऑप्शन, 20 से 60 के अंदर ये भी एक ऑप्शन, नहीं तो 60 से ज्यादा। तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, व्हेन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस देयर आर इफ, एल्स इफ एंड एल्स। Now there is a quick table. If one condition is evaluated, if else है तो one for true, another for false. Nested if means if के अंदर और एक if else if means there are multiple options. How many conditions evaluated? Multiple options. Correct. Now look at this case. In this case, what is the age? What is the marks? Marks is 88. तो 88 9 से ज्यादा है? नहीं है. It will come to this part. Marks कितना है? Marks is 88. It is definitely more than 80. So this part will get executed. Correct. And now I'm going to try this code in screen. देखो मैं सब चला के दिखा रहा हूं, एक एक करके चेंज करके, ठीक है। So the first part is compiled. Now marks is 92. 92 is definitely more than 90. ठीक है, तो स्क्रीन में क्या आएगा? It will be grade A plus, है ना माया? Grade A plus. Okay. Now I make this 82. When this one is 82, 82 is not more than 90. ये तो नहीं चलेगा, गलत, ठीक है। This is not going to work. This is not going to work. Now the next part will come. This part is yes, 82 is more than 80. तो स्क्रीन में क्या आना चाहिए? स्क्रीन में आना चाहिए ग्रेड A. Okay. What is the mistake? Mistake is that did not saved it, compiled, and run. Grade A will come. Definitely grade A will come. Correct? Now we're going to change this to 55. So let's make it 55. Now 55 is not more than 90, not more than 80, not more than 70, not more than 60. It is more than 50. This is the story. तो ये स्टोरी है। तो स्क्रीन में क्या आना चाहिए? स्क्रीन में आना चाहिए D. देखो स्क्रीन में आया क्या? D. करेक्ट। नाउ कैन यू टेल मी, अगर मुझे ये चाहिए आउटपुट कि फेल है तो क्या करें इसको? चलो मेक इट 45. Once I make this 45, now 45 is not more than 50, not more than 60, not more than 70, not more than 80, and not more than 90. So it is belonging to this block. Correct? तो स्क्रीन में क्या आएगा? स्क्रीन में आएगा फेल. देखो, yes, फेल आएगा. Correct? So this is the story of if, else if, else if, else if, and else. Now there are some common mistakes to avoid. देखो, what is the common mistake? Mistake है कि if I want to execute this block, तो मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट देना पड़ेगा. करेक्ट? नहीं तो ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्या होगा? इफ आई डू नॉट गिव एनी ब्रैकेट तो ओनली दिस पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. करेक्ट? ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ओके.
Now the concept of logical and, logical or, and logical not. Logical and means both conditions are true. Both conditions are true, तो आंसर ट्रू होगा. अगर एक फॉल्स हो गया तो दिस विल बी फॉल्स, तब भी फॉल्स होगा. दोनों फॉल्स है तब भी आंसर फॉल्स होगा. करेक्ट. तो कंडीशन इज लॉजिकल एंड में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू है तो आंसर विल कम. लाइक इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 75. तो 75 इज मोर देन 60, तो ये ट्रू है. अगेन 75 इज लेस देन 100, तो ये भी ट्रू है. आई टोल्ड यू अगर दोनों ट्रू है तो दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. करेक्ट. Now if I make a slight change in this code, suppose this is 95, correct? Now 95 is more than 60, yes. Score is less than 100, yes. 95 is more than 60 and 95 is also less than 100. Again this part is executed, no problem. Now I'm going to change once again. देखो, I make this is not 75. Now make it 45. Correct? This is 45. Now 45 is more than 60. No, this one is not true. Correct? So ये क्या हो गया? ये हो गया false. But this one is true. 45 is less than 100. तो एक false है और एक true है. तो else part will execute. Just now I told you अगर दोनों true है तो आंसर ट्रू. करेक्ट. ये है लॉजिक. लेकिन इसमें क्या है, एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो एल्स पार्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड. करेक्ट. व्हाट आर द ऑप्शंस? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ. तो देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ टर्नरी ऑपरेशन. टर्नरी ऑपरेशन क्या है, अगर कंडीशन ट्रू है तो दिस पार्ट गेट एग्जीक्यूटेड. Mistake, changing the color. Okay. So if the first condition is true, then this part get executed. This part is false, then this part is executed. तो true है तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी है एग्जीक्यूट होगा. अगर false है तो कोलन के बाद, लिसन टू मी, कोलन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट करेगा. करेक्ट. ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क के बाद, फॉल्स है तो कोलन के बाद. करेक्ट. नाउ लुक एट दिस कोड. दिस केस आई एम गोइंग टू गिव सम वैल्यू. यस, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. To compile fast and run. Enter your marks. Suppose my marks is 35. Now 35 is not more than 40. मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अगर ये 35 is not more than 40 तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा. करेक्ट. देखते हैं क्या होता है. Fail in the examination. Again I'm going to execute this code. 67. Now 67 is greater than 40. हाँ, ये ट्रू है तो पहला वाला, तो ट्रू है तो पहला वाला, फॉल्स है तो कोलन के बाद जो भी आएगा that will be printed. Correct? Yes, you passed the examination. This is the story. Okay. Now in this case, I converted the if else into ternary. Correct. Now look at this. What is the value of number? Number is 24. Now 24 greater than 0. Yes. 24 is greater than 0. 24 is greater than 0.
this part will get executed. Now 24 greater than 0, yes, so this part is executed. The positive number and this is also positive number. तो true है तो ये part execute होगा, correct. और गलत है तो next part get executed. गलत है तो this part will be executed. Now largest of 3 numbers. Now I took 3 numbers. N1 is 2, N2 is 9 and N3 is minus 11. Okay, now my question is N1 greater than N2? No, N1 is not greater than N2. So it will jump into this part. यहाँ पे चला आएगा, correct? क्योंकि मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि false है तो कोलन के बाद आ जाएगा, correct? Now come to next part. Now N2 greater than N3. Yes, N2 is greater than N3. तो ये सही है, सही होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है? N2, करेक्ट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2? वैल्यू ऑफ N2 is 9. So if we execute this code, we'll get this number. Understand? The concept is, say x is equal to, चलो कंडीशन, ठीक है. अगर कंडीशन सही है तो दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट, करेक्ट. अगर फॉल्स है तो दिस पार्ट विल एग्जीक्यूट. concept is, if it is true, this part get executed. अगर ये false है, this part get executed. This is the story. देखो कलर चेंज से पता चलेगा. ट्रू है तो पहला वाला पार्ट, false है तो कोलन के बाद जो भी है वो एग्जीक्यूट करेगा. Understand? This is the format of the ternary condition. इसको बोलते हैं ternary, correct? Ternary is basically a different formation of if else. देखो थोड़ी पहले मैंने देखा ये if else को मैंने ternary में कन्वर्ट किया, करेक्ट है ना? if else को मैंने ternary में कन्वर्ट किया. Okay, now you can read the comparison between if else and ternary operations, and here are some advantages and limitations of ternary operations that is marked here. You can pause this screen and can read. Okay, now mask greater than 40, this will execute. अगर ये false है this will execute. सही है तो this will execute. अगर ये false है तो next part will execute. Understand? Thank you.